So hello and a very good evening to all of you. Let me just verify हम लोग live है कि नहीं. Just give me a second. Just wait a minute. Let me verify. Yeah, so we are live and I am visible, I am audible as well. Let us begin then. So let's crack CBSE Commerce with Unacademy. I hope all of you guys are doing great. And this particular class is dedicated for informatics practices students. Informatics practices class 12 के students आप लोग join करो. We'll be beginning this session now. ठीक है? And till now we have been discussing on our unit 2 and we'll be continuing from here only. Okay? Fine. Hope you guys are joining. Yeah. Chalo. Let me introduce myself. My name is Devidatta Biswajeet and I am currently pursuing my BTech MTech dual degree at NIT Rourkela. And I am your subject expert for informatics practices, which is targeted for 12th CBSE board students. Okay? And our target exam is 12th CBSE board exam. And I would be covering your entire syllabus starting from the very unit 1 that is data handling. और उसमें हमने अभी तक कवर किया है Python pandas and data visualization with pyplot, and now we are covering the SQL part. Okay, so like this we'll be covering all 4 units and we will be completing everything and then practicing problems. ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, because all the important updates and announcements are being made in the telegram channel only. Okay, and if you are having any particular doubt or query, you can put that up in the telegram channel as well. Fine, so it's very easy. We have the link here. The link is you can directly copy paste this link in the browser, or if you have the telegram app, then you can also enter the link and join the telegram channel. The link is Quest 12th CBSE Commerce. ठीक है, तो आई होप आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल गया और आपने नोट कर लिया, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, और मैं आपको भी बताने वाला हूँ अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पैकेज. नाउ फॉर मी आई थिंक दैट Unacademy subscription package for a student is just like a gold mine. ठीक है, आपके पॉकेट में एक गोल्ड माइन की तरह ये एक चीज़ है जिससे you can have all the benefits that are available in any kind of scenario. Let's say for a physical education platform or an online education platform, all the features being combined into a single package you can find in our Unacademy subscription package. ठीक है, so a lot of features are there. For example, I will tell you about the live classes now. Live classes may you get environment like this where you can participate in live polls, you can participate in live chat, and for example this is a physics live class where your educator is interacting with you, you are interacting with your educator, you are interacting with your fellow mates. So it's like a complete interactive environment in your phone, mobile phone or smartphone. ठीक है, so with the help of smartphone you can access all these things, ठीक है, which was not possible when we didn't go that much digital. आजकल के ज़माने में we are having all these features and benefits, so why not avail that, right? And देखो, you get a lot of features. मैंने आपको बताया उसमें one of the big features or best features that I personally feel good about is live polls and leaderboard. ठीक है, live polls and leaderboard is a very good feature. अगर आप participate करना चाहो, for example you want to participate in the teaching learning process और उससे maximum आपको gain करना है, the best way is to attend polls according to me. For example देखो,
in this particular video you can see that we are having live polls in which you can select a particular option and you can see whether you have chosen the correct answer, correct option. Okay, and you can also check your position among all your fellow mates कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपने सही चूज किया या नहीं, राइट और कितने लोगों ने उसको सही सिलेक्ट किया है, हाउ मेनी पीपल हैव correctly selected, how many people have selected other options. You get all these stats in the live polls and leaderboard feature. Okay, also whenever you are learning something, the best way to learn it is to go for the test series. Okay, because no concept in the world can be mastered without practicing it at least once. Okay, so our test series feature allows you to do the same, right? It will allow you to participate in a stipulated time period and आपको आपका result भी instantly मिलता है and you get a report, ठीक है, जिसको आप analyze करके you can see that how you have performed, on what areas you are lacking in and what improvements you can make. ठीक है, so all these things are possible. चलो, what else? We have live doubt solution. Okay, live doubt solution भी is available and live doubt solution से मेरा मतलब है with your educator or with the subject expert you can interact directly and आपके solution जो है, questions जो है, उनके solutions वहाँ पे provide किए जाएंगे and all these minor doubts that you might have would be solved live. ठीक है, so that is also a very good feature. All these features, ठीक है, are available in the Unacademy subscription package. तो अगर आपको subscription package लेने में you want to start your learning journey, then the first thing you should do is download the Unacademy learning app. ठीक है, because अगर आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे एंड इंस्टॉल करोगे वहां से आप डायरेक्टली हमारा सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हो. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी. ठीक है, you want the subscription package, you want all these features, you want to start your learning journey with Unacademy, then just download the Unacademy learning app from Play Store, install it and then you can choose plus subscription. ठीक है, plus subscription आप choose कर सकते हो. There you can take the subscription package and now you just need to manage your goals. For example, you are targeting board exams, you can manage board exams, you can manage competitive exams as well. ठीक है, all these things are possible. So it's very easy and it is very beneficial for you. Okay, now let us talk about some subscription packages. What all subscription packages are available? देखो, हमारे पास पहले होता है प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पैकेज फॉर दोज who want all the features that I have listed right now. ठीक है, जो सारे फीचर्स मैंने अभी लिस्ट किए, all these features are being available in the plus subscription package. ठीक है, तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन जो है that provides you a lot of features like daily live classes होते हैं, टेस्ट सीरीज होता है. ठीक है, you get structured courses, इन सबका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको. You get to choose your own batch, you can switch between batches. ठीक है, all these benefits are being available in the plus subscription package. Now there are different time frames in which you can take the particular package, and if you go for a long term package you get more discount on the per month basis. ठीक है, देखो 1 month के लिए you are getting the entire package for 3000. ठीक है, 3000 per month आपको this is the cost. But if you go for the 24 months package then the equivalent 1 month cost is reduced to 1042. ठीक है, तो देखो 65% off जो है that you are getting when you are going for a long term package, that is overall costing you 25,000. so that's a very very affordable price to start with. ठीक है, इतना अफोर्डेबल प्राइस तो हम फिजिकल ट्यूशंस वगैरह में भी नहीं देते, बट स्टिल वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. इतने बेनिफिट्स इतने कम और अफोर्डेबल प्राइस में इट्स रेयर. But if for especially the students who are joining Unacademy, who are taking Unacademy subscription package, we are having these perks. ठीक है, and we have an additional perk. ठीक है, अगर आप मेरा रेफरल कोड एंटर करते हो, ठीक है, that is DVI10, then आपको additional 10% ऑफ मिलेगा on every other package. ठीक है, जो भी पैकेज यहाँ पे लिस्टेड है
उन सारे पैकेजेस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा इफ यू गो फॉर माय रेफरल कोड. ठीक है, so my referral code is of very it's can be very useful if you are going for let's say 24 months period package. Then क्या होगा, आपका 25,000 overall cost would be reduced to 20,500 because 10% of 25,000 is 2,500 और वो reduce हो जाएगा, that would be reduced. So if you want to start your learning journey at a very affordable price, then you can go for a long-term package and you can go for my referral code. ठीक है? Next we have the iconic subscription package. What is the iconic subscription package? Let me tell you. Iconic subscription package में plus subscription के सारे benefits available है. ठीक है? I told you about daily live classes. I told you about test series. I told you about the analysis report. I told you about live doubt solution. All these features, structured courses हो गए, उन सब का limited access हो गया. All these features were available with the plus subscription package. The iconic subscription package has all these benefits included, but it has some additional features as well. Let me tell you about the additional features. देखो, additional features में you have a feature called the personal mentor feature. ठीक है, ये मतलब personal mentor. So what is a personal mentor? A personal mentor is a person who would be guiding you throughout your learning journey by providing you customized study plan, customized study schedule, ठीक है, and also helping you out whenever you are stuck in something, ठीक है, in some problem or planning anything. You can approach your personal mentor and your personal mentor would be taking care that you are following a streamlined path to complete your learning journey in the smoothest possible way. ठीक है, so that is the job of your personal mentor. So it's a very great opportunity for you if you go for a personal mentor. ठीक है, and also the personal mentor would be discussing in regular open hours with your parents about your progress, ठीक है, and improvements that can be worked upon. ठीक है, all these things are possible in the iconic subscription package. ठीक है, live doubt solution etc. These are also included. So you can see the pricing as well here. आप देख सकते हो कि 6 months के लिए you are having it for 2,833, but if you go for a long term package, as I told you कि 24 months package पे जाओगे, then you are getting a higher discount, that is 29% off मिलता है आपको, that is costing you just around 2,000 per month, that is 48,000 overall. ठीक है, but again if you enter my referral code that is DEVI10, then आपको 10% off मिलेगा on your particular subscription package. ठीक है, so it would be reduced from 48,000 in total for 24 months to 43,200 for 24 months. समझ में आया? So it's just an additional benefit that you get whenever you are entering my referral code for any of the plans. Similarly, plus subscription for class 12 students if I talk about, then देखो that is costing you around 15,000 for 12 months. That is a discount of 42% from your 3 months plan. ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 साल का time period है. There you are getting everything for 15,000 in plus subscription. ठीक है, but again if you are entering my referral code, then you are getting it for just 13,500. So that's an additional benefit. And same story for iconic subscription package as well. You are getting the overall package for 28,000 for 12 months, but if you enter my referral code, then you are getting that particular package just for 25,200. That is a reduction of 2,800 INR because 10% of 28,000 is 2,800. So that are all the benefits that you get when you use my referral code DEVI10. So all the best for your next Unacademy subscription package. I hope आप लोग बहुत ही जल्दी अपना learning journey start करोगे with Unacademy, and I wish you all the best. आप लोग अपना preparation planning वगैरह कर लो, आपके exams बहुत ही करीब है, and I hope आप लोग crash course के लिए भी जाओगे. You go for revision planning as well. So all these packages are also gonna be put upon by our particular कंटेंट टीम. तो तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. देयर यू वुड बी गेटिंग ऑल द अपडेट्स. चलो, so today we'll be carrying on from what we have left in the last class. In the last class we were talking about specifically text functions. ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में
टेक्स्ट फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे. ऑल द टेक्स्ट फंक्शंस लाइक वी हैड लेंथ फंक्शंस, वी हैड मिड, we have left, right, we had char function, everything we have discussed in the last class. ठीक है, with substring function, substar, ठीक है, and we searched a substring using instar. So all these text functions we have discussed already. Now as it is done, now we shall move forward to date, time and aggregate functions. Okay, so date, time and aggregate functions को आज के क्लास में we will be covering entirely. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक ऑन द डेट फंक्शंस. ठीक है, व्हाटएवर डेट फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, लेट अस हैव अ लुक ऑन देम. फर्स्ट फंक्शन इन डेट फंक्शंस, एंड आई मस्ट टेल यू कि डेट फंक्शन इज अ क्लास ऑफ फंक्शंस which are used to retrieve date, specific days of the date, years of the date, so on and so forth, month, etc. ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं. पहला है CUR डेट, कर डेट और करेंट डेट. ठीक है, दोनों ही अल्टरनेटिव सिनोनिम्स है. ठीक है, दीज आर नथिंग बट सिनोनिम्स, राइट, दीज आर सिनोनिम्स एंड यू कैन यूज देम अल्टरनेटिवली एनीवेयर यू लाइक. ठीक है, नाउ फर्स्ट वन दैट इज कर डेट और करेंट डेट. अगर इसका हम लोग थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक देखें, so first of all it is used to return the current system date. क्या, it is used to return the current system date. current system date मतलब for example आज का डेट कितना है, आज का डेट है 15/12/2020, so it would return that. okay, of course इस फॉर्मेट में रिटर्न नहीं करेगा. the format would be y char to y and then mm and then dd. ठीक है, so first of all we would have year, and then we will have the month is nothing but 12, and the day, that is 15. okay, and the month always follows the convention that January to December we have the integral representation as 1 to 12, right? So all these things are available. Now the argument for the particular current date or कर date is void. ठीक है, void मतलब none. void को we can refer as none. ठीक है, void and none are same thing. so what is the point of saying void? मतलब you don't need to pass any argument to कर date or current date. अब simply कर date या current date लिखोगे so आपको मिलेगा. ठीक है, क्या, current date of the system, current system date, and the return value is date. ठीक है, date एक data type है. क्या बोला मैंने, डेट एक डेटा टाइप है that is in the format that is given here. alright, so this is all about current date or current date. now let's have a look at some example. तो अगर हम MySQL prompt में जाए and we write select current date or we write select current date. ठीक है, here the MySQL prompt में ये भी small m होगा, that's another thing, छोड़ो उसको. then select current date or select current date. मैंने आपको बताया था whenever we are using function we are using the select command. why we are using the select command? I told you that we have a temporary table in which all the mathematical operations of functions will have their return value stored. ठीक है, and उसको हमें select करना होगा. ठीक है, we have to select that from that particular table. that is why whenever we want to display some output in SQL we have to use the select command, because everything in SQL is what, a table. everything in SQL is a table, right? table को हम लोग और क्या बोलते हैं, relation. alright, these are just basic concepts जो मैंने आपको last class में बताए थे. now the output of these two statements. ठीक है, यहाँ पर दो बार आउटपुट आएगा अगर दो बार लिखोगे, बट आई एम शोइंग जस्ट आउटपुट फॉर एनी वन ऑफ देम, सो इट वुड बी 2020 12 15 एज एक्सपेक्टेड. ठीक है, नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो. इफ यू ऐड एन इंटीजर टू कर डेट, अब कर डेट क्या है, एक फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप क्या है बताओ, उसका रिटर्न टाइप है डेट. ऑलराइट, द रिटर्न टाइप ऑफ कर डेट इज नथिंग बट डेट. सो अगर आप डेट के साथ कोई भी इंटीजर ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल 10, it can be 987604 anything -2. so this particular integer ये किसके साथ ऐड होगा, ठीक है,
द क्वेश्चन इज द पर्टिकुलर इंटीजर इस डेट के साथ कैसे ऐड होगा. सो इट विल ऐड to the days parameter as an integer. days parameter for example हमारे पास क्या है 2020 12 15. so 15 के साथ ऐड होगा क्या 10 whenever you are adding 10 to the particular date. ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक बार ताकि हमको ये अच्छे से समझ में आए. देखो, adding integer to cur date, we have in the MySQL prompt this particular query. ये क्वेरी क्या बता रहा है, देखो सिलेक्ट कर डेट प्लस 12. क्या लिखे हैं हम लोग, सिलेक्ट कर डेट प्लस 12. ऑलराइट, सो सिलेक्ट कर डेट पे क्या आएगा, सिलेक्ट कर डेट पे आएगा 2020. देन आएगा हमारा मंथ, मंथ इज 12 एंड द डे इज 15, राइट. एंड वी वुड बी एडिंग व्हाट, वी वुड बी एडिंग 12, राइट, वी वुड बी एडिंग 12. जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक माय ऑडियो. All right, so everything is audible. Okay, so what would be the output of this following? I told you कि days के साथ add होगा कौन, मेरा integer. So days के साथ एक बार integer को add करो, it will become 27 because 15 plus 12 is 27. But how will be the output? Would the output be like this, 2020 12 and 17, oh sorry 27? Would the output be like this? That's a question. ठीक है, so the output won't be like this, the output would be like this. ठीक है, ऐसा होगा आपका आउटपुट. what is this output, मतलब ये कौन सा टाइप का आउटपुट यहाँ पर हमें दिख रहा है. so this particular output is an integer. क्या बोला मैंने, this particular output is an integer. so we are not getting a date when we are adding cur date with a particular integer. ठीक है, we are getting in return an integer only. ठीक है, हम लोगों को एक इंटीजर ही मिल रहा है. ऑलराइट, सो दिस इंटीजर इज 2021,227, राइट. ये एक पर्टिकुलर इंटीजर है. सो दिस इज बीइंग डिराइव्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. चलो हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं. इसको आपको प्रेडिक्ट करना है. मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, ठीक है. एज आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू इंटीग्रल कैलकुलेशंस विद कर डेट. सो नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन. predict the output for the following query. ठीक है, ये जो हमारे पास query है, for this query we have to predict the output. so MySQL prompt में you have to write select mod then cur date into 2,2. ठीक है, और यहाँ पे आपको यूज करना है concept of both date and math functions. ठीक है, एक बार इसको आप ट्राई करो by pausing the video and I will tell you the answer in a minute. ठीक है, देखो, just try this. the query is very simple. select mod of cur date into 2,2. ठीक है, this is the particular query that is been given here. चलो, I hope आपने पॉज करके अभी तक इसको ट्राई कर लिया होगा. let me now have the solution. देखो, how to do this. first of all we have to look at the outer function that is mod and forget it for a minute. ठीक है, कुछ मिनट के लिए इसको भूल जाओ. then we have cur date into 2. what we have, cur date into 2. what is cur date? cur date में क्या वैल्यू है, cur date में वैल्यू है current system date, that is 2020 then what 12 then 15, that is cur date. and हमने cur date के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, we have multiplied 2, right. and then we have commas 2. just forget this comma 2 and this mod for a second and concentrate here only. so यहाँ पे अगर concentrate करेंगे, देखो this particular thing is cur date. ये क्या है, cur date, current date, right, current system date. और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया गया है, एक इंटीजर. और मैंने अभी आपको रूल क्या बताया, whenever you are adding or multiplying or dividing or subtracting anything from cur date, it would get converted to a integer, to an integer. तो कैसे होगा, 2020 12 15 और ये टोटल को हम लोग इंटू कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे विथ व्हाट, 2. Alright, so what would be the result? You can calculate that. ठीक है, 2020 12 15. अभी बताता हूँ आपको what would be the result. just a second. just a second. 2020
1215 and into 2, that is around 40402 and then 430. So this is the particular word, this is the particular number that you would be getting as an output for this statement. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 40402 and then 430. Okay, that is the output for curated into 2. Now we have comma 2 and we have a mod function here. What we have? A mod function. देखो mod function क्या करता है, मैंने आपको बताया था mod function always calculates the modulus. So whenever we are writing mod of m comma n, then we are getting m modulus n, right? M modulus n मिलता है हमको. So here also we are going to calculate the remainder. What? The remainder for this particular expression जहाँ पे अंदर m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू है 40402430 and n का वैल्यू क्या है? That is 2. And of course this is divisible by 2, right? This is divisible by 2. So if at all it is divisible by 2, then you are going to get the remainder as what? 0. Because देखो 40402430 जो है यहाँ पर, that is divisible by 2. So divisible by 2 मतलब ये जब इससे डिवाइड करेंगे 2 से, so रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा. So the output for the following query would be what? 0. Alright. So ये आपका क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है. So I hope आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में कर सकते हो. Alright. तो एग्जाम में all this type of questions are important and these are quite easy as well अगर आप step wise solve कर रहे हो. ठीक है. Next, in the date functions, date and time functions, let us look at the date function itself. So date function क्या करता है यहाँ देखो, it is used to return the date parameter from a given date or time. मैं फिर से बताता हूँ देखो why it is used. It is used to return the date parameter. किसको? Date parameter from any given date or date time. अब देखो इसका आर्गुमेंट, अभी देखो मेरे पास फंक्शन क्या है? डेट. इसका आर्गुमेंट होगा कोई डेट या फिर डेट टाइम. अब देखो आप पूछोगे व्हाट इज डेट टाइम. सो डेट टाइम का फॉर्मेट ऐसा होता है, मैंने बताया डेट का फॉर्मेट होता है ईयर एंड देन हमारे पास होता है हाइफन मंथ एंड देन हाइफन डे एंड देन वी हैव आवर एंड कॉलन मिनट कॉलन सेकंड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेट एंड डेट टाइम, राइट? सो डेट टाइम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम, दैट इज कॉल्ड डेट टाइम. ठीक है. डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? डेट टाइम. ऑलराइट. नाउ द रिटर्न वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है. फॉर द रिटर्न वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, डेट फंक्शन को जब भी आप कॉल करते हो तो आपको ये डेट टाइम एज एन आर्गुमेंट देना पड़ेगा. किसको? डेट फंक्शन को. या फिर आप सिंपली एक डेट भी दे सकते हो. सो ईदर यू हैव टू गिव अ डेट टाइम एज एन आर्गुमेंट और अ डेट, और उसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा? अ डेट. वेरी सिंपल एग्जाम्पल देखो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं. सिलेक्ट डेट, then you are writing 2020-12-14, that is the date part. The time part is 02-05-00. So what is the use then? तो देखो ये क्या करेगा, इस डेट टाइम जो यहाँ पर लिखा है डेट टाइम, इस डेट टाइम से उठाएगा क्या? It will be extracting the date part. तो देखो आउटपुट क्या आएगा? 2020-12-14. So this part is coming as the output. So it's very simple, very means easy to think about. ठीक है. So that's it. अगर आप यहाँ पे डेट दोगे तो वो वही डेट को रिटर्न कर देगा. That's the job of date function. ठीक है. Next we have the month function. Okay, let me tell about the month function now. What is the job of the month function? It is used to return the current month integer. ठीक है. मेरे पास अलग और भी फंक्शंस है जो इंटीजर नहीं, मंथ का नाम भी रिटर्न करेंगे. तो आपको पता होना चाहिए which function is returning you the integral value of the month and which is actually returning the name of the month. ठीक है. So this particular month function will return the month integer. ठीक है. करंट मंथ का इंटीजर को रिटर्न करेगा from the given date. आर्गुमेंट क्या दोगे? आर्गुमेंट डेट दोगे.
एक पर्टिकुलर डेट यू हैव टू पास इन दी फंक्शन, जो भी फंक्शन का आपका नाम है दैट इज मंथ फंक्शन, वहां पे आपको पास करना होगा एज एन आर्गुमेंट अ पर्टिकुलर डेट, और एक फिर क्या करेगा, इट विल रिटर्न यू एन इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल, before that January to December 1 to 12 we are having the convention. For example, you are writing select month and you are passing this particular date. ये date आप pass कर रहे हो inside the month function, ठीक है. So what will happen? The output would come as 12. Why? Because इसका जो month का parameter है that is actually 12. It is December month, but December month में यहाँ पर December जो string है that won't be coming as the output. Rather, the integral value that is the 12 representation for December would be coming. ठीक है. यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट आप नोट कर सकते हो that if the specified date has 00, क्या बोला मैंने, स्पेसिफाइड डेट में 00 है, किसकी जगह पे, मंथ की जगह पे, राइट, मंथ फील्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना है 12, बट यहाँ 12 की जगह फॉर एग्जाम्पल क्या होता है 00, तो उस केस में आपको आउटपुट मिलता है 0. दैट्स ऑफ कोर्स व्हाट यू माइट बी एक्सपेक्टिंग, बट कुछ लोगों को डाउट होता है कि व्हाट इज द प्री डिफाइंड रूल. तो प्री डिफाइंड रूल है दैट यू विल बी गेटिंग 0, ठीक है, whenever you are having 00 here. So you know that a month cannot have 00 here because either it would start from 01 or end with 12, ठीक है, either or नहीं, it will start with 01 and end with 12. But if someone has specified 00 here, you would not be getting an error, rather you would be getting what, you would be getting 0 as the output, ठीक है. ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे आपको बताना था. ऑलराइट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वी हैव द मंथ नेम, ठीक है. अभी हम बहुत सारे फंक्शंस को ऐसे ही देखेंगे. ऑल दीज फंक्शंस आर वेरी इजी, वेरी सिंपल. आपको बस क्या करना है, जस्ट पे अटेंशन टू देयर आर्गुमेंट, देयर रिटर्न टाइप एंड देयर जॉब, ठीक है, वो क्या करते हैं. सो मंथ नेम इज अनदर फंक्शन इन द डेट और टाइम फंक्शन, ठीक है, इन द कैटेगरी. देखो, इट इज यूज्ड, क्यों यूज होता है, इट इज यूज्ड टू रिटर्न द नेम ऑफ द मंथ फ्रॉम अ गिवन डेट, ठीक है. अभी तक जो भी हम फंक्शंस देख रहे हैं, दिस आर जस्ट रिटर्निंग अस द पैरामीटर्स दैट आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द डेट और द फील्ड्स व्हिच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द डेट दैट इज पास्ड एज आर्गुमेंट. देखो यहाँ पर आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे, आर्गुमेंट में वी आर पासिंग डेट, ओके, वी विल बी पासिंग द डेट. नाउ द रिटर्न वैल्यू वुड बी अ स्ट्रिंग. व्हाट डू आई मीन बाय दैट. तो देखो, फॉर एग्जांपल, यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन विच you are selecting what, you are selecting the function का output आप select कर रहे हो. Of course this would be in a temporary table जहाँ पर आपका function का पहले return value जाके store होगा, and then you would be extracting that or selecting that using the select command, ठीक है. That is the general mechanism. अब देखो, general नहीं, that is the mechanism itself, that is not general, that is the absolute mechanism. देखो, select month name, now you are passing the date, and यहाँ पर देखो date में मंथ कौन है, मंथ है यहाँ पर 12. सो 12 मतलब क्या, दिसंबर. सो यू विल बी गेटिंग द आउटपुट एज दिसंबर, दैट इजी. ओके, समझ में आ रहा है. सो दिस इज जस्ट फेयर एग्जांपल कि आप कैसे मंथ नेम को यूज कर सकते हो टू एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ द मंथ. कुछ ज़्यादा फायदा यहाँ से आपको लग नहीं रहा, बट आपको सिंगल क्वेरीज में इसका यूज नहीं होगा, बट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेरीज को एक साथ यूज करेंगे तब इसका यूज हो सकता है, ठीक है. दिस इज रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, सो यू मस्ट रिमेंबर द टेक्स्ट फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड कॉम्प्लीमेंटरीली विद दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है. कॉन्केटिनेशन हो गया, ठीक है. ऑल ऑफ दिस फंक्शंस यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द स्ट्रिंग क्लास और टेक्स्ट क्लास, ठीक है. चलो, नेक्स्ट वी हैव द डे फंक्शन. इट्स वेरी इजी एज वेल, बट इसको भी हम लोग एक बार ओवरलुक कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. तो देखो, इट इज यूज टू रिटर्न द डे फॉर अ गिवन डेट आर्गुमेंट. तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको एक डेट पास करना है किसमें, इस डे फंक्शन में, और वो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर. क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर. सो आर्गुमेंट इज ऑफ डेट टाइप, रिटर्न वैल्यू इज ऑफ इंटीजर टाइप. एंड इफ यू राइट MySQL प्रॉम्प्ट में इफ यू राइट select and then you write the day function और उसमें you are passing a date, right, you are passing a date. What will happen is that the day function will return the day. The day is here 14, and if you are confused, just
take a look on the format y, and then mm, and then dd. All right, so this is what is the format for the date. So यहाँ से we'll be getting what? The day. The day is 14, so output is 14. The day function just extracts the day from the current date. Not the current date, any given date that you pass as the argument, the day of that date will be extracted. Next, we have day name, and this is really useful. Okay, this is a really useful function. Okay, if you think about कि मैं आपको पूछूं that 2014 January 23 का डे कौन सा था? What is the day name? So how would you tell me? Of course, आप गूगल करोगे, right? You would be googling and you would be checking the calendar of what? 2014. अब चैलेंज तो इसमें कुछ नहीं है that you can easily solve this particular problem, आपको मिल जाएगा, right? But if a certain problem is given to you in which you have to calculate for say 20 or 30 such dates, ठीक है, which are of random or I can say very old periods, ठीक है, 1999 say for example. So in that case what would you be doing? ठीक है, in that case you have to use some function. ठीक है, if you are working with SQL, you like to work with SQL and you have SQL opened when I am asking you this particular question, or if you are getting a question, ठीक है, a problem that you have to solve in a table, and here you are required to calculate or to find the name of a particular day in a particular year or month. ठीक है, उस केस में how will you do? That is a question. ठीक है, or simply if you are getting a question like this in your exam, how will you do? So we'll be using the day name, right? The day name functions returns you what? Returns you the name of the day for a given date. ठीक है, मतलब इस particular date के लिए what was the day, ठीक है, it will be returning the name. All right, so what is the argument? The argument is of course the date type. ठीक है, आपको जो date है you have to pass that date as what? Argument. All right, now what will be the return value? The return value will be a string, and here this string is representing what? The names of the days, and we have 7 days starting with Monday and ending with Sunday. So all these days are strings actually. Okay, so if we write an SQL query that is like this, MySQL prompt may select day name, and then day name may we are passing a date which is like this 2020 12/15, then what would be getting is Tuesday, because today is Tuesday and this is today's date, right? If you are watching this video, ठीक है, in say for example 2030, all right, if you're watching this video in 2030, then do check it with the SQL. I don't know if SQL is still being taught, but I hope this video is kept till that date. Chalo. Now let's use now. Okay, now let's use now. So in date time functions, now is a function that can be used to return the current date and time. And as I told you, a date time has the following format. I told you the date time has the format y, and then what? Then dd for day, and for month, and then we have a space, and then we start with our hours. So hour, colon, minute, colon, second, right? So this is the format of what? Date and time. So date and time का ये combined format होता है, right? So we'll be doing what? We'll be using the now function to get the current system date and time. All right, just like we used what? हम starting में हमने क्या use किया था, याद करो? We used the date function. उससे भी पहले we used the curdate function. So what was the curdate doing? Or we can also write current date, right? All these two things are synonyms.
Both these two things are synonyms, current date. So what were these two particular synonyms giving us as output? The current system date, right? Current system, अभी का जो system का date है, that was the output. Now का काम है, it would return you the current system date and current system time, both these things. Very simple. What is the argument? What is the argument? The argument is void. Void means just like current date or current date, you are not required to सप्लाई एनी आर्गूमेंट. ठीक है, आपको कोई आर्गूमेंट यहाँ पे पास नहीं करना है. यू वुड बी जस्ट गेटिंग द आउटपुट फॉर द गिवन क्वेरी. द रिटर्न वैल्यू इज डेट टाइम ऑफ कोर्स. ठीक है, एज आई टोल्ड यू. एंड यू हैव टू राइट MySQL in the in the MySQL prompt you have to write. ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली आएगा. Then you have to write select now. What you have to write? Select now. Select is just selecting the return value of now that is stored in some temporary table, right? So what is the return value of now? The return value of now is this particular date and time. For today it is 2020 12:15 and I wrote the statement at 17:59:25, so it is giving me this particular output. All right, so I hope आपको ये सारे functions समझ में आ रहे हैं, because these are very easy and these are just relevant whenever you are having some complex nested functions. ठीक है, nested functions हम लोग cover करेंगे when we would be practicing problems. ठीक है, there are some other functions. ठीक है, these functions are actually not that important. ठीक है, not that important. ठीक है, इतने ज़्यादा important नहीं है, because we have used enough functions that can help us in querying any particular thing related to date or time. Still, you can have a look, you can read about them. I have listed 3 more functions. One is day of month, one is day of week, another is day of year. What does it do? It does nothing. It just takes an argument of date and returns you the day of that particular month. ठीक है, it is returning you the day of the week and it is returning you the day of the year. So it is just returning the day argument, the day field. ठीक है, it is just returning you the day field. It's not a big deal. ठीक है, you can have a look, you can study them, but I am not explaining these things because these are additional things. ठीक है, these are just additional functions. We are not required to use them as well. For day we have day function, for month we have month function. Okay, for year we have year function as well. So I don't think anything else is required. Chalo, now let's have a look on aggregate functions. We took a look on variety of in the starting math functions. Then we took a look on text functions. Right now we are taking a look on date functions, date and time functions. All these functions are there. Now we'll be taking a look on aggregate functions. ठीक है, mostly IP syllabus for class 12th contains functions. ठीक है, along with the basics. If you are not familiar with the basics of SQL, then आपको difficulty हो सकती है if you are trying to use the functions while querying through a table. ठीक है, so you must be familiar with all the basics and that's why I focused on basics for the first 2 classes. अगर आपको कोई डाउट है, you can refer those videos and any miscellaneous commands we'll be taking a look on them tomorrow. ठीक है, so a word of advice from me is that you practice a lot of queries in your book or from all the practice problems that I will be giving you, and then everything would be fine, because this particular unit is very simple, yet questions can be a bit tricky. All right, chalo. So aggregate functions, these functions perform calculations. क्या बोला मैंने? These functions do calculations, perform calculations on a set of values to return a single value. That's very simple, that's very intuitive, right? Because for example, I have this ratings attribute, right? This ratings attribute is having different integral values. All right, you can take a look, all these integral values are there: 9.3, 9.5, 8.6, 9.1, 8.5. If I tell you what is the sum
of all the ratings, then you would be using an aggregate function called sum. All right. Similarly, if I ask you about the average, you would be using an aggregate function called avg. Similarly, there are a lot of functions and we will be taking a look on each of them step by step. So इन functions का काम क्या है? इन functions का काम यही है that एक particular attribute के लिए all the tuples के ऊपर ये लोग क्या कर सकते हैं? They can do calculations. ठीक है? For a given attribute, it can do calculations for all the tuple values. Tuple से मेरा मतलब है rows. Alright? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है एंड आई होप आप लोग नोट करते चल रहे हो मेरे साथ ऑल द डेफिनेशंस. ये म्यूज़िक वाला टेबल हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है. आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू एसक्यूएल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. राइट, चलो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्रीगेट फंक्शंस नाउ. द फर्स्ट फंक्शन इज मैक्स फंक्शन. ठीक है, एंड मैक्स फंक्शन का काम बहुत ही सिंपल है, सरल है. It returns the maximum value for a set of values. अब इसमें ज़्यादा क्या बोलना है ना. फॉर एग्जाम्पल select max of ratings from music. देखो पहले तो हमारा select जो स्टेटमेंट है that is going to select what select something from a given table. That table is a temporary table. ठीक है, that is used to store calculations or functional values. So we are using a function then, and this function is nothing but max, and you are passing the name of an attribute. What? You are passing a name of an attribute. What is the name of an attribute we are passing here? That is ratings. So you can check that in the ratings attribute, what is the maximum value? The maximum value is 9.5. Alright, so the maximum value is 9.5. So we expect that we should get 9.5. Indeed, we are getting 9.5 as the output. ठीक है, we are just writing select what? Select max of ratings from the music table. ठीक है, that's very simple and intuitive and very easy, just like English language. ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें difficulty नहीं है. आगे बढ़े, देखो we will be then using the min function and is similar to max. ठीक है, it is just similar to max. Because max function may you are calculating the maximum, min function may you will be calculating the minimum. So that's it, returns the minimum value for a set of values. You just write select mean of ratings from music. So for the ratings attribute, it will be calculating the minimum, and then the select statement would be extracting that for the output. Okay, so what is the minimum value? Let's have a look. 9.3, 9.5, 8.6, 9.1, 8.5. And as humans, we are very we are visually very strong, so we know that 8.5 is the minimum value. Rather, in the programming languages, we were using a lot of if and else, right? So चलो इसका output कितना आएगा? 8.5. all right, let's move forward then. Next we have the count function. What we have the count function. Now count function is a very special function because it can return you all the non-null count. ठीक है, count क्या करेगा? आपको all the non-nan values का count देगा. non-nan नहीं, non-null. ठीक है, nan जो था हमारा, हमने सीरीज और डेटा फ्रेम में पढ़ा था. तो non-null values को ये क्या करेगा? will be counting. Alright, so that is the job of count. For example, here is the definition. Example से पहले let's have a look at the definition. Returns the count of tuples. क्या बोला मैंने? Returns the count of tuples. For a given attribute, you might be having a lot of tuples. For example, this is the ratings. And for the ratings, you have a lot of tuples. For example, we have 5 tuples. So for all these 5, it will check how many of them contain non-null values, and it will return the count of those particular tuples. For example, 4 of them have non-null values. जहाँ पे भी null नहीं है, ठीक है, null जहाँ पे नहीं है, ठीक है. So if 4 of them don't have null, then the output would be 4. ठीक है.
लेट्स हैव अ मोर कॉमन एग्जांपल. अगर मैं लिखूं select count, मैं यहाँ पे फिर से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ. इफ आई एम राइटिंग select count star from music, all right, select count star from music, then the output would be 5. Why? Because star means all the particular triples. फिर से बताता हूँ. Star means all the tuples for all aggregates. sorry, all attributes. ठीक है, aggregate से मेरा aggregate फिर से बोल दिया मैंने. ठीक है, so all the tuples for all the attributes. तो कितने tuples हैं यहाँ पे देखो. star मतलब सब कुछ. so we have how many tuples? 1 2 3 4 5. so 5 tuples are there. so what would be the return value? The return value of count would be 5. Alright, that's why the output is what? 5. That is a simple way you can work with count. ठीक है, and you can also write here count and then specify the name of an attribute in place of star. star की जगह आप कोई attribute भी दे सकते हो. ठीक है, and for example मैं आपको एक example देता हूँ that if 2007 was not there and we instead had null here. फिर से बताता हूँ, अगर 2007 की जगह यहाँ पे null होता, we might be having null, then क्या होता? if you would have wrote count of year, then what would be the output? as 2007 is year का जो fifth tuple है जहाँ पे 2007 पहले था, that is containing null, so that won't be counted. So what would be counted? 2014, 2013, 14 and 15. ठीक है, it will count the same thing again as well, because its job is to count the number of tuples, but it will not count what? null. ठीक है, null को ये count नहीं करेगा. Understood? All right. So what would be the output then? Count of year, that would be 4. So that's fundamental thing that you can observe. ठीक है, so that's about count. Next we have sum, and sum function का काम जो है that is to calculate sum of what? all the tuples for a given attribute. For example, we have ratings here. तो रेटिंग्स में all the ratings 9.1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, इन सब का सम कौन कैलकुलेट करेगा? सम फंक्शन. So sum function takes the attribute name and returns the sum for all the tuples. All right, simple है. So returns the sum of all the values in the tuples for a given attribute. Just you have to write select and then write the function name, that is sum. Pass करो argument, or argument में you have to give the attribute name. So we are giving the name year and we have to select this from music table. तो देखो music table में year में sum क्या होगा? 2014 plus 2013 plus 2014, 15 and 2007. So 14 plus 14 is 28, 13 plus 15 is another 28, so 56, and then 7 मतलब 63. So that's total 10,063. Alright, so we should be getting 10,063 as the sum. Indeed, we are getting 10,063 as our required sum after we are using the sum function. Alright, तो बहुत ही सिंपल था. Right, आपको बस क्या लिखना है? Select sum and then pass the attribute name whose sum you have to find out. And you, of course, you have to write from music, ताकि आप जो year attribute use कर रहे हो वो कौन से table से use कर रहे हो, you have to specify. Next we have the average function, that is AVG. And what is the job of this particular function? It will be calculating the average of all the tuples for a given attribute. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है definition. Returns the average of the values in tuples for a given attribute. ठीक है, of tuples कर लो इसको. In tuples क्या है?
ऑफ कर दो, ठीक है। सो रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्यूपल्स फॉर अ गिवन एट्रीब्यूट। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। सेलेक्ट एवीजी ऑफ ईयर फ्रॉम म्यूजिक। So you have to calculate the average of year. Now average of year is nothing but, देखो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने कितना 3-4 लाख बार तो किया होगा इसको ठीक है। तो सम ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ईयर, अगर फंक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। मैथ्स में आपने कभी पढ़ा होगा ना कि एक फंक्शन h इज इक्वल टू क्या होता है, f बाई जी। सो ये हियर ऑल्सो वी आर डूइंग दिस कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो सम ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ईयर, दैट इज अ सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड। So if you are writing select AVG of year from music, so it will go to the music table, because music table so you have to select some parameter. So what parameter it is going to select? It is going to select the functional value for year, functional value, that is average value for the year. So what will be the average value? The sum was what? The sum was this particular thing na, 10,063, and the count was 5 because we don't have the null value, ठीक है। आप null value के साथ confuse मत होना, मैंने तो आपको ये example दिया था। We are having all the non null values here, non null values अगर है हमारे पास सारे, so हमारे पास count कितना है, we have the count as 5 and the sum as 10,063, so the output would be 10,063 divided by 5. That is nothing but 2012.6. So this is what? This is the average, ठीक है। सभी years का average आ रहा है, and years जो है these are integers, that's why we are able to calculate their average, ठीक है। These are not specifically year data type or something like that, ठीक है, वैसा नहीं है, these are just integers, ठीक है। This is the job of average or AVG. You can remember it by sum by count, that is the composite functional form. Alright, I guess आपको ये भी समझ में आ गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो here I have changed the table, यहाँ पर मैंने दो रेटिंग सेम कर दिया, देखो 9.5 और 9.5 है यहाँ पे, बट इन द ओरिजिनल टेबल यू कैन सी एक था 9.5, एक था 9.1, so there is a difference here, there is a twist here. So let's assume that the twist is fine, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। So 9.5 और 9.5 में you have both the ratings are same right now, ठीक है। मतलब चिल आउट और नो लव जो दो हमारे पर्टिकुलर गाने हैं उनके लिए रेटिंग सेम है। अब नाउ द स्टेटमेंट इज सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एवीजी रेटिंग्स फ्रॉम म्यूजिक। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एवीजी रेटिंग्स फ्रॉम म्यूजिक। तो पहले डिस्टिंक्ट को भूल जाते हैं, पहले हम करते हैं एवीजी रेटिंग्स। एवीजी रेटिंग्स मतलब रेटिंग्स का एवरेज, रेटिंग्स का एवरेज निकालो। 9.3 प्लस 9.5 प्लस 8.6 प्लस 9.5 प्लस 0.5 होगा, राइट। तो 0.5 प्लस 0.5 1 होता है, फिर 1.5 होता है, एंड देन 0.6 हो जाएगा 2.1, देन 2.4। 2.4 तो पॉइंट्स आ गया, फिर 9 प्लस 9 हो गया मेरा 18, और एक 9 हो गया 27, एंड 27 प्लस व्हाट 16, राइट, दैट इज 43। So 43 plus 2.4, that is nothing but 45.4. So ये मेरा टोटल है, सम है, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, द नंबर ऑफ रेटिंग्स, द काउंट ऑफ रेटिंग्स, दैट इज 5. So 45.4 डिवाइडेड बाय 5, राइट। जो भी आउटपुट आएगा इसका, इट्स आउटपुट वुड बी 9.8 आई गेस, जो भी है, आई डोंट नो कितना होगा, 9.8 सॉरी 6, 9.6. So 9.6 जो है that would be the output. Now distinct लिखा गया है, so अगर आप सोच रहे हो कि एवरेज ये आएगा, so ये नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। distinct मतलब it will just calculate the average for all the distinct values, that is 9.3, 9.5, 8.6 और 8.5। अब इसका आंसर खुद निकालना, ठीक है, एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन फिर से पूछूंगा, ऑलराइट। चलो, आपको मैंने बताया डिस्टिंक्ट से क्या होगा, ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज वुड बी एडेड अप एंड देन डिवाइडेड बाय देयर काउंट।
तो चलो आज के क्लास के लिए बस इतना रखते हैं। आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट एंड देन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एनी डाउट यू हैव। ओके, सो इफ यू वांट टू अनलॉक फ्री कंटेंट विथ माय कोड, ठीक है, आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो इन आवर अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जस्ट यूज माय कोड दैट इज DEVI10। जस्ट सर्च द अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड इट। लॉग इन करके अपना गोल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट गो टू द मेनू बटन एंड देन सिलेक्ट स्पेशल फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, और वहां पे यू कैन एंटर द इनवाइट कोड DEVI10 टू एंटर योर टू अनलॉक योर फ्री प्लान, ठीक है। And similarly, to join the quiz, just download the Unacademy Learning app, log in, select your goal, and in the menu button, you can select the plus, and at the bottom, you would be getting the label test option. वहाँ पे आप join quiz कर सकते हो, ठीक है। Make sure कि मेरा कोड DEVI10 आप enter कर रहे हो। So this is my referral code DEVI10. It's very useful for you because अगर आप अपना next Unacademy subscription पैकेज लेना चाह रहे हो, so you would be getting 10% off. And from tomorrow onwards I would be giving you this special class timetable that was not fixed for me because of some issues, ठीक है। अभी मैंने ऐसे regularly fix कर दिया है, so I would be getting you giving you the timetable, ठीक है। So make sure आप special classes attend जरूर कर रहे हो, ठीक है। चलो, so I would meet you in the next class. Make sure कि आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड यू हैव हिट द बेल आइकॉन बिकॉज ऑल द वीडियोस आर इन सीक्वेंशियल मैनर, रेगुलर मैनर, सो यू शुड गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। एंड मेक श्योर टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास tomorrow at the same time. Till then, take care. Bye bye.